sake of you, my King, I'm giving you my dreams. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new life. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. I'm singing you this song, waiting at the cross, and all the world owes you. I count it all as lost for the sake of knowing you, the glory of your name, to know the lasting joy in sharing in your pain. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. Oh, I surrender all to you, all to you. Lord, help us to surrender. Every area of our life. Show us, Lord, where we need to surrender. I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. Why people want to sin? तो क्यों लोग पाप करना चाहते हैं? Why are you attracted by sin? क्यों पाप के द्वारा तुम आकर्षित If होते हो? you're serious about increase, then seriously live a holy life. अगर वृद्धि के द्वारा तुम भरोसा करते हो, वृद्धि को भरोसा करते हो, तो बहुत ही पवित्र जिंदगी जीना बहुत ही अच्छा Do है। you want to have a good life? क्या आप अच्छी जिंदगी चाहते हो? Do you want to have peace? क्या शांति चाहते हो? Do you want to have a happy क्या home? खुशी घर में खुशी A चाहते good हो? marriage? क्या अच्छा शादीशुदा जिंदगी चाहते Have हो? good children क्या अच्छे बच्चे चाहते हो that will obey you? जो तुम्हारा आदर करते हैं? Because no children will obey you when you just preach to them and you don't do what you preach. अगर आप प्रचार करते रहोगे और उनका पालन नहीं करोगे तो आपके बच्चे खुद आपके आदर नहीं करेंगे। If you're sitting there and drinking and you tell your son, don't drink, my son, I'm telling you, you know. अगर आप बैठकर पीते रहेंगे और अपने बच्चों को कहेंगे मत पियो It बच्चों, won't work. वो काम नहीं चलेगा। That preaching won't work. तुम्हारा प्रचार काम नहीं करेगा। Be holy. पवित्र रहिए, Be serious about being holy because that will get you increase. पवित्र रहने में बहुत सीरियस रहिए क्योंकि वह तुम्हारे वृद्धि का कारण बनकर रहेगा। Holiness is essential for increase. पवित्रता जो है वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। We looked at these three things, but let's look at today being generous. Fourth thing is being इन generous. चीजों के बारे में देखा था। आज जो है उदारता के बारे में देखते हैं। उदारता से रहना का मतलब क्या है? How many of you know that God is not कंजूस? He is not a stingy कितने God. लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कंजूस नहीं है, वो कोई कंजूस परमेश्वर He's a नहीं है, generous वो God. उदारता से देने वाला परमेश्वर है। How much He has given to man. इतना एक व्यक्ति को उसने दिया है।
For one man, he made a beautiful एक garden. मनुष्य के लिए बहुत सुंदर सा बगीचा बनाया। For one man, 4 rivers. एक मनुष्य के लिए 4 नदियां। For one man, gold mines. एक मनुष्य के लिए सोने के सुरंग। For one man, thousands of fruit bearing एक trees. मनुष्य के लिए हजारों सैकड़ों फल देने वाले वृक्ष। For one man, sun, moon and the stars. एक मनुष्य के लिए सूरज, चंद्रमा और तारे। For one man, he gave much more than what one man would ever एक need. मनुष्य के लिए जितना उसको जरूरत है उससे भी ज्यादा उसे दिया है। You know, he's a liberal वो God. बिल्कुल उदारता से देने वाला परमेश्वर And है। when I say he's a liberal God, that is not his political जब मैं position. कहता हूँ कि वो बहुत ही उदारता से देने वाला परमेश्वर है, उसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही उदारता से देने वाला। When I say liberal God, I'm saying that he's a generous God. जब मैं कहता हूँ कि लिबरल परमेश्वर तो उदारता का परमेश्वर है। The book of Proverbs says the liberal soul shall be made नीति वचन के fat. पुस्तक में कहा गया है कि लिबरल मन जो है बहुत ही तंदुरुस्त Amen? होगा। Have Amen? you ever read that? क्या आपने उसे पढ़ा है? You want to be made fat? क्या आप मोटे होना चाहते हो? I mean, in the Bible, fat is talking about, having a good life. बाइबल में जो है एक अच्छी जिंदगी के बारे में कहा गया है। You don't want to be fat, but you want to be fat. आप जो है मोटा नहीं बल्कि चर्बी, बिल्कुल Do you want to be तंदुरुस्त। fat with the blessings of क्या God? परमेश्वर के अच्छे अच्छे तंदुरुस्त आशीष आप चाहते हो? You want a lot of everything? क्या सब कुछ बहुत रूप से चाहते हो? Do you want, to live without any lack or want? क्या आप बिना किसी कमी के मांग के रहना चाहते हो? Then I tell you, my friend, I challenge you, the way to get there, to fatness in life, to blessing in life, is not to be a conjuice, not to be a stingy person. मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए, वृद्धियों को पाने के लिए कंजूसी पे रहने से कुछ नहीं होने वाला। But the world says that's the way to get पर it. दुनिया कहता है कि ऐसा ही तुम पा सकते हो। They say, get all you can all you get, and sit on your can. कहते हैं कि जो कुछ मिलता है ढांप लो, ढांप कर उसी पे बैठ जाओ। That's world's philosophy. वह दुनिया का They say तत्व है। that's the way you're going to make ऐसा ही it. तुम पा सकते हो। It sounds nice, but it's utter nonsense. सुनने में तो अच्छा है पर पागलपन की बात The है। Bible says exactly the opposite. बाइबल बिल्कुल उल्टा कहता है। Says the liberal soul shall be made fat. कहता है कि उदारता का मन जो है बढ़ेगा। He that waters shall also be watered himself. जो पानी देता है उसे भी पानी दिया जाएगा। He that withholds will suffer lack. जो अपने लिए जमा करके रखता है वह कमियों में रहेगा। In the New Testament it says, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over shall नए be नियम में poured कहा into गया your है कि bosom. दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर हिला हिलाकर पूरे माप से मनुष्य तुम्हारी गोदी में डालेंगे। There is no way other than being generous in order to get to riches and in order to have increase. धन को पाने के लिए, वृद्धि को पाने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। If you want to be miser, अगर आप कंजूस बनकर रहना चाहते हो, then you're not going to be liking my sermons. मैं कहता हूं मेरे सरमन्स के अनुसार नहीं होने Better वाले। to avoid for the next 2-3 weeks. अगले 2-3 हफ्ते के लिए तुम्हें अवॉइड करना होगा। I don't think it'll work any week. मैं कहता हूं किसी हफ्ते को काम नहीं करेगा, Because if you come here, I'm going to be telling about being generous. क्योंकि आप यहाँ आओगे तो मैं जो है उदारता की बात करूंगा। Why? क्यों? Because I want you to have increase. क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप वृद्धि पाओ। There is no other way कोई और रास्ता नहीं है other than generosity to arrive at increase and prosperity. उदारता के अलावा समृद्धि और वृद्धि को पाने के लिए The कोई whole रास्ता नहीं kingdom है। of God is based on seed पूरे principles. परमेश्वर का राज्य जो है इस बीज के सिद्धांत पर ही निर्भर है। Remember, we read the parable of the sower. मालूम है उस बीज बोने वाले उस दृष्टांत के बारे में Jesus पढ़ा said था। this is the key parable. यीशु ने कहा कि यही मुख्य दृष्टांत है। Don't understand this parable, then you won't understand any अगर teaching आप that he इस gives. He said. दृष्टांत को नहीं समझोगे तो बाइबल के किसी और दृष्टांत को, उपदेशों को नहीं समझ What पाओगे। did he liken the kingdom of God to? परमेश्वर के राज्य को आप कैसे Now when चाहते I हो? say kingdom of God, what am I talking जब मैं about? कहता हूं परमेश्वर का When I राज्य तो say किसके kingdom बारे of में God, कह रहा हूं? I'm talking about God's economy, मैं- how things work in God's system of things. मैं परमेश्वर के उस आर्थिक स्थिति के बारे में, परमेश्वर के उस राज्य में क्या काम करता है, किस रीति से काम करता है, How does God operate? कैसे परमेश्वर ऑपरेट करता है, How do the things of God operate? कैसे परमेश्वर के काम ऑपरेट होते हैं, How does spiritual life operate कैसे and function? परमेश्वर की ये आत्मे की जीवन जो काम It करती है, functions like the seed. वह जो एक बीज के समान काम The करती है। kingdom is likened to the seed sown, and then it grows to be a परमेश्वर great का big राज्य tree. जो है एक बीज के समान बोए हुए उस बीज के समान जो है काम करता है ताकि वो बढ़े। Everybody say seed. सभी कहो कि बीज, Only a seed that is sown, a small seed, like a mustard seed is sown, and then it grows into a big tree. सिर्फ एक बीज जो है राई के दाने के समान छोटा सा बीज जो है बोया आता है, फिर वो बड़ा पेड़ This हो is जाता how है। the kingdom works. ऐसा ही he says. राज्य काम करता है।
So how do you get prosperous? How do you get increase? How do you get better than कैसे now? आप सफलता पाते हो, समृद्धि पाते हो, बढ़ोतरी पाते हो, उन्नति पाते हो, कैसे तुम और बढ़ने लगते हो? You got to use the seed principle. तुम्हें इस बीज के सिद्धांत को उपयोग करना Have you होगा। got a seed? क्या आपने बीज पाया है? Did you put some seed in the ground? क्या आपने भूमि में कुछ बीज बोए हैं? Have you got some seed in the ground? क्या आपने बीज कुछ बोए हैं? If you don't have any, अगर आपके पास नहीं है, without it you can't increase. बिना बीज के आप वृद्धि नहीं पा सकते, Because it just doesn't work like क्योंकि that. वह ऐसा काम नहीं करता। You can't just sit there and refuse to sow any seed and expect to increase and expect to be आप prosperous वहां and be बैठकर blessed. बिना कुछ बोने के लिए इनकार करते हुए कभी वृद्धि को नहीं पा सकते। You want more? क्या You sow. आप ज्यादा चाहते हो तो आपको बोना होगा। See, when God made the heaven and earth and everything, He made all these तो fruit-bearing जब trees. परमेश्वर ने आकाश भूमि बनाया तो बहुत सारे फलदायक वृक्ष बनाए। And then God told man, you want more? The seed is within the tree फिर itself. परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें और ज्यादा चाहिए तो उस पेड़ के उस फल में ही बीज मैंने रखा है, It's there. वह वहीं पर है। Every tree, every plant carries within it the seed for its own हर एक multiplication. वृक्ष, हर एक फल जो है उसके अंदर ही बीज को उसने पाया हुआ In है। other words, he said, next time you want more, don't come to me. You follow my principle, the seed principle. You reach for the seed and sow the seed. As much as you sow, you'll reap. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगली बार ये फल तुम्हें और ज्यादा चाहिए तो तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। उस फल के अंदर ही बीज रखा हुआ है, उस सिद्धांत को पालन करो, उसको बो तो अपने आप तुम फल को पाओगे। God gave the seed. परमेश्वर ने वो बीज दिया, God started the thing. परमेश्वर उस काम को शुरू किया। Then said, if you want more, you take the seed and sow it and let it फिर grow. कहा कि तुम्हें और ज्यादा फल चाहिए तो उसे लेकर बो और ज्यादा पाओगे। So you want more? तो तुम्हें ज्यादा चाहिए There is no way to get more without a seed. तो बीज के बिना कोई और रास्ता नहीं है पाने के लिए। That is why Jesus said, give and it shall be given unto you. इसीलिए यीशु ने कहा कि दो तो तुम्हें वापस दिया जाएगा। Well, somebody might say here, well, I don't वो believe यहाँ that पर कह stuff. सकता है कि मैं इस पर भरोसा नहीं करता। Then what are you doing फिर आप here? क्या कर रहे हो यहाँ पर? Hello? हेलो, If you don't believe अगर that, आप इस पर भरोसा नहीं करते, what are you doing in this place? आप इस जगह में क्या कर रहे Are हो? you lost? क्या आप खो चुके हो? Did someone show you the wrong way into the church? क्या किसी ने गलत रास्ता बता दिया कि तुम कलीसिया के अंदर आके बैठे हो? Because this is a place where we talk about the principles of the kingdom of क्योंकि ये एक God. ऐसा जगह है जहाँ परमेश्वर के वृद्धि के कानूनों को हम बताते We're हैं। not talking about man's philosophy. यहाँ पर मनुष्य के तत्वों को नहीं बताते, How does it work in God's कैसे kingdom? परमेश्वर के राज्य में काम करता है। Don't tell me you don't believe यह मत it. कहिए कि तुम इस पर भरोसा नहीं करते, Because if you're here, then you got to believe क्योंकि it. अगर आप यहाँ पर हो तो आपको इस पर भरोसा करना Amen. होगा। आमीन। How many say I believe कितने लोग it? कहते हैं कि मैं इसे भरोसा करता हूँ? Everybody say I believe सभी it. कहो कि मैं इसे भरोसा हूँ। If you don't believe the scripture, अगर आप इस परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करते then I can't help तो you. मैं आपको सहायता नहीं कर सकता। You can say, oh brother, I got this problem, I got that problem, I don't have nothing, you pray for me to get आप something. कह सकते हो कि मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास वो समस्या है, ये कमी है, वो कमी है, आपको मेरे लिए प्रार्थना करना होगा तभी मैं बाहर निकल सकता हूँ। Huh? Maybe you went everywhere and everybody prayed for you. आप हर जगह जा चुके होंगे, सबने आपके लिए प्रार्थना भी किया होगा, But here I will tell पर you, मैं यहाँ आपसे कहता हूँ, instead of praying for you, I'll tell you the only way for you to get more is to sow. And आपके that लिए is how you प्रार्थना get more. करने की बजाय आप सबसे अच्छा बेहतर रास्ता मैं ये बता सकता हूँ कि आप जाकर बोइए। Amen? आमीन। Because that's the only way to grow. क्योंकि बढ़ने के लिए यही एक रास्ता है। You may have very आपके little, पास बहुत कम होगा, but praise God, that is your पर seed. परमेश्वर का धन्यवाद हो, वही बीज है। You can start with that little and work to something आप great. उस थोड़े से लेकर शुरू कर सकते हो, बहुत बड़ी कटनी पाओगे। Amen? Amen. You can start with barely something and arrive at something wonderful देखिए, and आपके पास great. बहुत ही थोड़ा होगा, उससे आप शुरू कर सकते हो, बहुत बड़ा आप पाओगे। A small thing in your life can be a seed. जिंदगी की छोटी सी छोटी चीजें आपकी जिंदगी में बीज हो सकती हैं। One little thing that you think that is not important, but that's a seed. जब आप समझते हो कि ये बिल्कुल छोटे सा चीज है, ये बहुत मुख्य नहीं है, मैं कहता हूँ वही बीज है। Time is a seed. आपका समय एक बीज है। When you sit down and work on your studies or work on whatever you're doing, that's a seed. You're जब आप sowing. बैठकर कुछ पढ़ाई करते हो, जब कुछ काम करते हो, तो मैं कहता हूँ वो एक बीज है, बोने के बराबर है Isn't that है right? कि नहीं? You think that seed will not क्या आप produce? समझते हो कि वो उत्पन्न नहीं करेगा? I'll tell you, it produces a great and wonderful मैं harvest तुमसे tomorrow. कहता हूँ कल बहुत बड़ी कटनी को वो लाएगा। You may be burning the midnight oil and you may not go to sleep and you may sit all night and study and it may look like hard work, but I'll tell you, you'll reap
with great आप joy पूरी one रात day. शायद दिया लगाकर उसमें तेल डालकर जो है कड़ी मेहनत करके पूरी रात आप पढ़ रहे होंगे। मैं कहता हूं बहुत बड़ी कटनी पाओगे, क्योंकि वो बोने के बराबर है। That activity of studying is a seed. You are sowing something for a better future. पढ़ने का वह काम जो है एक बोने के बराबर है। आप बहुत बड़ी कटनी को उसके द्वारा पाने लगोगे। Amen. आमीन। That work that you're doing is a seed for a better जो future. काम आप कर रहे हो एक अच्छा बीज है जो बेहतर भविष्य के लिए कर रहे So हो। seed is in many forms. It's not just in money, it's in many तो forms. बीज जो है सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि बहुत अधिक So रास्तों में even है। when you're studying, don't be a कंजूस. तो आप जब पढ़ते हो तो कंजूसी मत कीजिए उसमें भी। I used to be a कंजूस in studies. मैं पढ़ाई में बहुत कंजूसी करता था। I always bought the Moore Market मैं notes. मूर मार्केट से नोट्स खरीद कर लेकर आता था। They gave the last 10 years question पिछले paper. 10 साल के क्वेश्चन पेपर मुझे देते If थे। I couldn't get the current question paper, जब मुझे करंट क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता था, I'll at least go and buy the Moore Market. मैं मूर मार्केट से वो प्रश्न पत्र लेकर आता था। And I will basically go eeny, meeny, miny, mo. You know, that और type of मैं stuff, you आधारभूत know. देखा जाए तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पे बोलता था। Which to study, because I want to study as little as possible and get as much as possible. किसे पढ़े थोड़ा मैं पढ़ लेता था और जितना मुझे मालूम उतना मैं लिख के आ जाता था। I don't study more than one night. एक रात से ज्यादा मैं कभी नहीं पढ़ता था। For tomorrow's exam, today I'll be searching in Moore Market very frantically. कल के एग्जाम के लिए आज जाकर मूर मार्केट में प्रश्न पत्र I ढूंढता thought था। it's a waste of time to sit down and study all night. and मैं all जो है day, you know. पूरी रात बैठकर कभी नहीं पढ़ना नहीं चाहता था। After all, after you study, what are they going to give you? They may give you some job that is totally पढ़ाई unrelated. करने to के this. बाद क्या मिलने वाला है? एक नौकरी देंगे जो तुम्हारी पढ़ाई से कुछ मिलता जुलता भी नहीं होगा। So just get a degree. तो Something. सिर्फ एक डिग्री पालो काफी है। Some degree. कोई ना कोई डिग्री, But just study as little as possible. जितना कम हो सके उतना पढ़ लो, बस काफी है। So if you had World War I and World War II, I studied either one. अगर विश्व युद्ध 1 और 2 हो तो दोनों में से एक पढ़ता था बस। I'll see what came last time. मैं देखता कि पिछले साल क्या आया, What came the time before last time. पिछले हफ्ते पिछले साल से पिछले साल क्या आया। And then I'll analyze the possibility of what can come this time. फिर मैं जांच लेता था कि उससे पहले क्या आया I होगा। was a very clever fellow in all of these मैं इन things. सभी चीजों में बहुत चतुर था। And then I'll study only one. सिर्फ मैं एक विश्व युद्ध And पढ़ूंगा I will pray a great prayer, Lord. और मैं एक बहुत बड़ा प्रार्थना भी करता Don't let था, that World War I come because I've studied only हे two. प्रभु विश्व युद्ध पहला कभी प्रश्न में ना आए, मैं क्योंकि मैंने दूसरा विश्व युद्ध पढ़ा है। And if World War II that I studied came, boy, I'll go to town with it. I'll just write and just get good marks. अगर दूसरा विश्व युद्ध के बारे में प्रश्न आ जाए तो मैं कहता हूँ इतना लिखता था उसको लेकर कोई भरोसा भी नहीं कर I पाएगा। know some boys that studied World War II and had a World War I in pocket. मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो महाविश्व युद्ध को दूसरा उन्होंने पढ़ा होगा और पहला विश्व युद्ध के बारे में अपनी जेब में रखा हुआ होगा उन्होंने। They'd carry that anyway, just in case. वे जो है उसको अपनी जेब में डालकर चले जाते थे, चाहे कुछ भी हो जाए देख लेंगे। I never did that. मैंने कभी ऐसा नहीं किया। But I was conjuice. I was economical in my studies. पर मैं बहुत कंजूस था And I used to boast about it. I study so little and I get so और much. मैं उसको लेकर बहुत बड़ाई करता था कि मैंने बहुत कम पढ़ा और बहुत ज्यादा But मार्क when पा I लिया। went to study the Bible, then only I got serious. पर जब बाइबल पढ़ने के लिए गया तो बहुत सीरियस हो गया। And I really got into फिर it. मैं उसके अंदर गया And I see the result of और it. मैंने उसका नतीजा भी देखा, Because the more I put into it, the more I'm reaping. क्योंकि जितना मैंने उसके अंदर डाला उतनी कटनी मैं पा रहा हूँ। Some people wonder, oh boy, how did you get like कुछ this? लोग कहते हैं कैसे यार तूने इतना मार्क पा लिया। Not some magic. कोई मैजिक नहीं है It's just that I applied myself. भाई, ये into it. इसलिए कि मैंने उसे अप्लाई किया अपनी I जिंदगी में। put myself into it, and every day is like a test day for me. मैंने I'm अपनी studying. जिंदगी में उसे अप्लाई किया, हर दिन उसे अपने काम किया, फिर पाया। Every Sunday is like big final exam. हर रविवार जो मेरे लिए एक फाइनल एग्जाम की तरह है। So I'm working for hours and hours and hours and writing and tearing it up, writing again. Working on तो मैं it. घंटों भर जो पढ़ रहा हूँ उसके फाड़ रहा हूँ, नोट्स लिख रहा हूँ। And every Sunday is like फिर that. हर रविवार ऐसे ही होता Every है, Tuesday is like हर that. मंगलवार को ऐसा And होता when है। Tuesday is over, I just let out a sigh of relief. और जब मंगलवार खत्म हो जाता तो थोड़ा मुझे चैन Just मिलता for है, one day. सिर्फ एक दिन। And again I start. फिर वापस शुरू करता For हूँ next Sunday. अगले रविवार के लिए। For last 20-25 years, it's been like that. पिछले 25 साल से ऐसे Now चल रहा people think that by magic you है। get लोग this way. सोचते हैं कि कोई जादू कर रहा हूँ ऐसे पा रहे हैं अच्छी चीज। Somebody said, well, God has given you much, brother. Some gift is there. कुछ कहते हैं कि ब्रदर परमेश्वर आपको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, कुछ है आपके पास। Now, even if God gives you a gift, if you don't cultivate it, you will have देखिए nothing. अगर परमेश्वर कोई गिफ्ट भी दिया हो तो उसको तो लेकर तुम काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। Every good gift comes from देखिए God. हर एक भली चीज जो परमेश्वर के पास आती है, But the cultivation part of it belongs to तो you. उसको लेकर काम करना जो है तुम्हारा So भाग what है। are you doing about it? तो आप उसे लेकर क्या कर रहे हो?
You see, if you don't sow, you will never देखिए, reap. अगर आप नहीं बोओगे तो कट ही नहीं पाओगे। Telling students here, if you don't sow in the matter of your studies, you will never यहाँ reap. के छात्रों को मैं कहता हूं कि अगर तुम नहीं बोओगे अपने पढ़ाई में तो कट ही नहीं पाओगे। Whatever you're doing, if you don't sow, you will not reap. जो कुछ आप कर रहे हो, नहीं बोओगे तो कट ही नहीं पा सकते। Amen? आमीन। So, God wants you to be generous in तो sowing. परमेश्वर चाहता है कि तुम उदारता से बो। If you're sowing in terms of your studies, just sow generously. अगर आप अपनी पढ़ाई में बो रहे हो तो मैं कहता हूं उदारता से उसमें बो। Instead of studying 1 hour, study 1 whole day. 1 घंटा पढ़ने की बजाय पूरा 1 दिन पढ़िए, Because then you're being क्योंकि generous. तब आप उदारता से कर रहे हो। Then you'll have a great फिर future. एक बहुत अच्छा भविष्य आप पाने लगोगे, Because whatever you sow, that is what you will क्योंकि reap. जो कुछ आप बोते हो वही तुम काटोगे। In finances, it's the same way. आर्थिक स्थितियों में भी ऐसा ही है। In developing yourself in every way, it's the same way. अपने आप को बढ़ोतरी पाने में हर एक रीति में ऐसा ही है। So, work on that. तो उस पर काम कीजिए, Be generous. उदारता से रहिए। And I'll tell you, the kingdom of God operates by these मैं principles. तुमसे कहता हूं परमेश्वर का राज्य जो है इन्हीं सिद्धांतों पर काम करता है। If you want to go to the next level, then you got to sow in such a way that it will take you to the next अगर level. आप अगले स्तर पर जाना चाहते हो तो परमेश्वर चाहता है कि तुम उन स्तरों में बोने लगो। Fifthly, 5वां, learn to receive. पाने के लिए सीखिए। How many of you know how to receive? कितने लोग जानते हो कैसे पाया जाए? Now it's like this, in some games you see they play it so good, but in the end they lose. देखिए, कुछ गेमों में देखा जाए तो अच्छा तो खेलते हैं पर आखिर में हार जाते हैं। They played very well, अच्छा तो खेलते हैं but they lost in the end. पर आखिर में हार जाते हैं। It's like the operation was successful, the patient died. देखिए, ऑपरेशन तो बिल्कुल सफल हुआ पर मरीज मर गया। They play very good, but in the end, no result. अच्छा तो खेलते हैं पर आखिर में नतीजा बहुत बेकार गया। In life, you need to know how to bring it in, how to receive, how to finish in good देखिए, form. जीवन में जो है तुम्हें सीखना चाहिए कि कैसे हम पाए, कैसे उसको जो एक अच्छे स्तर में अच्छे फॉर्म में लेकर आए। You must learn how to get a good finish, a winning finish is very आपको ये important. जान लेना चाहिए कि कैसे जो है जीता जाए, जीतने वाले उस फॉर्म में लेकर आए। Sometimes in some plays you will find some players not doing well during the whole match. They'll be struggling, but they'll have a good देखिए, finish. कभी-कभी देखा जाए तो अच्छे पूरे मैच में वो अच्छा तो नहीं कर रहे पर आखिर में जीत जाते हैं। Somehow they'll last till the end. In the end, they'll just go for किसी the तरह आखिर victory. तक आ जाते हैं और आखिर में जो है वो मैच जीत जाते हैं। In the church, there are many people that are sincere, that are good, कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सच्चे हैं, बहुत ही भले हैं, that are holy, बहुत पवित्र हैं, that are diligent, बिल्कुल सच्चे हैं, that are generous बहुत ही उदारता से देते हैं, in giving and all that. देने और सभी कामों में, But they just don't know how to take it to a final victorious पर finish. नहीं जानते कि आखिर में कैसे विजेता हो, कैसे जीते, कैसे सभी चीजों को प्राप्त करें। They don't know how to finish it वे good. नहीं जानते कि कैसे अच्छे रूप से उसे खत्म किया जाए। Now that's very important. बहुत ही जरूरी है वह, Because when you don't know how to finish it good, then every effort that you put forth is a waste. क्योंकि जब तुम नहीं जानते कि कैसे जीता जाए, कैसे जो अपना बना लिया जाए, तो सारा कोशिश बेकार है। What do you have to do to have a good finish? एक अच्छे अंत के लिए आपको क्या करना है? How can you receive from God? कैसे आप परमेश्वर से पा सकते हो? Now, you must understand that blessing and prosperity and abundance flows from God like a river, like a mighty river. It is flowing आपको ये towards जान you. लेना चाहिए कि परमेश्वर की आशीषें, बहुतायत का जीवन और परमेश्वर की सारी बातें जो एक नदी के रूप में तुम्हारी ओर बह कर आ रही हैं, It's just flowing towards you. तुम्हारी ओर बह रही हैं। In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever
ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think.